Today we will discuss about the properties of the cardiac muscle. In the previous lecture हमने पढ़ा था structure and the functions of the cardiac muscle, and in today's lecture our major concern will be about the properties of cardiac muscle. We see that the cardiac muscle has certain characteristics, and among them there is at the first there is the contractility. The cardiac muscle has a property of the contraction. Contractility is one of the property in the cardiac muscle. As we know that the main function of the heart, that is to pump blood out of its chambers, or to pumping of blood through the body, or even within the heart itself. It is the main function of the heart. And secondly, it contracts continuously and constantly. This pumping blood and continuous contraction is because of the heart muscle. It is because of the heart muscle. The pumping of blood out of its chambers is by the contraction of the cardiac muscle. Cardiac muscle की contraction की वजह से heart is able to pump out blood throughout the body, even to pump the blood within the heart itself, to circulate the blood within the heart itself. It is by the contraction of the heart muscle that we call the myocardium, this myocardium is made up of the cardiac muscle cells, or we can also say that cardiac myocytes. It is the first property. And second, we see the conductivity. स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में मैंने इस पॉइंट को थोड़ा बहुत टच किया था, द कंडक्टिविटी. हियर I will let you explain this conductivity as a property of the cardiac muscle. This conductivity means commonly जो मसल्स जो हैं ये कंट्रैक्शन, इनका कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म कैसे है. जैसे कि नर्वस सिस्टम से इम्पल्स आ जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है अलॉन्ग विद द मोटर न्यूरॉन्स, और वो मसल उसको कम्युनिकेट करते हैं, और अल्टीमेटली मसल जो है वो कम्युनिकेट होती है और मसल की कंट्रैक्शन टेक्स प्लेस होती है. बट हियर इन केस ऑफ द कार्डियक मसल इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कंडक्शन, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मसल्स से जो कंडक्शन, वहां पे कंडक्शन प्रोसेस जो होती है, ये इस कार्डियक मसल्स में दिस कंडक्शन प्रोसेस डिफरेंट. दैट इज व्हाई द कंडक्टिविटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी कार्डियक मसल. यहाँ पे क्या होता है, जो हार्ट होता है, हार्ट नर्वस सिस्टम से जो इम्पल्स आ जाते हैं, वो इसको नहीं, उस नर्वस सिस्टम के इम्पल्स पे हार्ट जो है वो कम्युनिकेट नहीं होता है. लेकिन क्या होता है, हार्ट हैज इटसेल्फ ए स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सिस्टम. इसका एक स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सिस्टम है, अपना कंडक्शन सिस्टम है, स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सिस्टम है. वो स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सिस्टम क्या है, दैट इज द साइनोएट्रियल नोड. हार्ट हैज साइनोएट्रियल नोड. दूसरा एंट्री वेंट्रिकुलर नोड भी है, लेकिन यहां पे हम वी विल touch and my point is the sinoatrial node. Sinoatrial node is the specialized conduction system in the heart by which heart itself generates impulse, right? ये sinoatrial node, it is commonly known as the pacemaker. Commonly in आम फार्म लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि pacemaker, दिल का जो वाल बोलते हैं, जो pacemaker है, उसको हम sinoatrial node बोलते हैं. And this sinoatrial node, it is the special conduction system in the heart. And on the base of this sinoatrial node, heart itself initiates and distributes. एक तो ये initiate करता है itself on the base of the sinoatrial node, on the base of this pacemaker. The heart itself initiates and distributes nerve impulse. और उस impulse को एक initiate करता है, फिर distribute करता है to other parts, to contract its parts, its cells. इसके सेल्स, हार्ट के सेल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए ये क्या करता है, साइनोएट्रियल नोड के बेसिस पे ये इनिशिएट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है नर्व इम्पल्स. ये नर्वस सिस्टम पे ये डिपेंड नहीं है,
like the skeletal muscle is dependent on the nervous system. When the impulse comes from the nervous system and the electrical impulse generate hoga along with the motor neuron, then the muscle will communicate. No, it is not all that in cardiac muscle, but here the fact is that the heart muscle जो है, they are not initiated from the nervous system. The impulse जो रिसीव होता है नर्वस सिस्टम से, ये उस नर्वस सिस्टम के इम्पल्स से कम्युनिकेट नहीं होता है, इनिशिएट नहीं होता है, इसकी कंडक्शन इनिशिएट नहीं होती है. बट द फैक्ट इज दैट it has a specialized conduction system. That specialized conduction system is called the sinoatrial node, and the sinoatrial node is also called the pacemaker. And this, on the basis of the sinoatrial node, what happens there, it generates impulse, and it initiates impulse and distributes that impulse to the other parts of the cells within the heart in order to contract, right? उसके बाद third property, that is the rhythmicity. We are familiar to know this word rhythmicity. It has a function of autorhythmicity. इसकी autorhythmicity autorhythmic है. It contracts in a rhythmic unit. एक rhythmic unit में ये contract करता है. And one more thing, that heart has inherent property of rhythmic contraction. Rhythmic contraction की inherent property है हार्ट में, राइट? जो कार्डियक साइकिल है, दैट इज कांस्टेंट. कार्डियक साइकिल कंटिन्यू है. जिसका कार्डियक से साइकिल बैठेगा, मीन्स के कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मीन्स के हार्ट ने काम करना छोड़ दिया, व्हाट हैपेंस देयर, द डेथ. और डिजीज भी हो सकती है, नॉट ओनली द डेथ बट डिजीज भी हो सकती है. मीन्स कि इन द लेमैन्स लैंग्वेज कि हार्ट जो है, हार्ट ने काम करना छोड़ दिया तो इंसान मर जाता है, राइट? तो हार्ट, दैट इज वाई जो सर्कुलेटरी प्रोसेस है, दैट इज द कंटिन्यूअस. मीन्स कि जो कार्डियक साइकिल है वो कंटिन्यूअस है. कार्डियक साइकिल जो कंटिन्यूअस, और कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल मीन्स जो अल्टरनेटिंग बेसिस पे जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स, अल्टरनेटिंग contraction and the relaxation of the heart chambers are referred as the cardiac cycle. उसको cardiac cycle बोलते हैं. इस cardiac cycle में दो चीजें हैं. एक तो सिस्टोल है, जिस सिस्टोल को क्या बोलते हैं, जिस सिस्टोल को पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन बोलते हैं. एंड सेकंड, इट इंक्लूड्स डायस्टोल, जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन. These two things are included in the cardiac cycle, and this cardiac cycle, it is the continuous process in the heart. ये continuous process है. Diastole and systole ये continuous process है. This cardiac cycle, it is a continuous process. This continuous process and the contraction, जो contraction है हार्ट में, जो contraction है, जो ये constantly contract करता है repeatedly, and it contracts in a rhythmic unit में contract करता है. That is why it has inherent property of rhythmic contraction. And one more thing, that is refractory period. What does refractory period mean? This refractory period is one of the property in the skeletal muscle. It means कि जब during the systole the heart does not respond to any other stimulus. सिस्टोल के दौरान, मैंने अभी बोला कि रिदमिसिटी में मैंने बोला सिस्टोल एंड डायस्टोल ये कार्डियक साइकिल के दो एस्पेक्ट्स हैं. कार्डियक साइकिल इज द अल्टरनेटिंग contraction and relaxation of the heart chambers, that we refer to cardiac cycle. And cardiac cycle includes two aspects, that is the systole is the contraction, and diastole is the relaxation. And during the systole means during this systole means during the contraction के दौरान heart does not respond to any other stimulus. contraction के दौरान, systole के दौरान हार्ट किसी और स्टिमुलस पे रेस्पॉन्ड नहीं करता है, कभी भी रेस्पॉन्ड नहीं करता है.
सिस्टोल के दौरान, कंट्रैक्शन के दौरान हार्ट इट नेवर रेस्पॉन्ड टू एनी अदर स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस पे भी ये रेस्पॉन्ड नहीं करता है। इवन हाउएवर स्ट्रांग इट मे बी, अगर स्टिमुलस कितना भी स्ट्रांग हो, ये यहाँ पे हाउएवर स्ट्रांग इट मे बी, ये कहाँ पे ऑल एयर नन लॉ का कंसेप्ट है, जो मसल्स में ऑल एयर नन लॉ है वही है। अगर एक्शन, अगर स्टिमुलस कितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों ना हो, लेकिन इन केस ऑफ द कार्डियक मसल that cardiac muscle has property that it does not respond to any other stimulus, however strong it may be, कितना भी सिस्टोल के दौरान, ड्यूरिंग सिस्टोल कार्डियक मसल्स जो है ये कभी भी रेस्पॉन्ड नहीं करता है स्टिमुलस की ओर, बाकी स्टिमुलस के पे ये कभी रेस्पॉन्ड नहीं करता है। अगरचे बाकी स्टिमुलस जो है, जो स्टिमुलस वो कितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस ही क्यों ना हो, लेकिन उस पर ये रेस्पॉन्ड नहीं करता है। ये क्या, ड्यूरिंग सिस्टोल। दिस मैकेनिज्म, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टरी पीरियड। And this refractory period, this phenomena of refractory period is also one of the property in the skeletal, in the cardiac muscle. Hope आपको अच्छी तरह ये properties of the skeletal muscle समझ आया होगा। First is the contractility, second is the conductivity, थर्ड कंट्रैक्टिलिटी मीन्स कि कंट्रैक्शन, हार्ट मसल की कंट्रैक्शन की ही वजह से हार्ट हैज द मेन फंक्शन दैट इज द पॉप आउट ब्लड थ्रू द बॉडी, pop out blood through its pop blood out of its chambers and contract constantly. This is because of the heart muscle. By the contraction of the heart muscle, this contractility is possible, and this is the property of the cardiac muscle. And secondly, likewise, there is the conductivity, means के heart has itself its own specialized conduction system. On the basis of that conduction system, that the sinoatrial node, heart initiates and distributes nerve impulse to the rest of its other cells within the heart in order to contract. It is not like that. Okay? It receives impulse from the nervous system. It is not like that. And after that, there is the rhythmicity. We know that the heart works constantly, and ऐसा नहीं है कि हार्ट ने काम किया फिर 5 मिनट रेस्ट लिया, 10 मिनट रेस्ट लिया, 1 घंटा रेस्ट लिया, 2 दिन रेस्ट लिया, ये ऐसा नहीं है। बल्कि हार्ट का जो कार्डियक साइकिल है, जो अल्टरनेटिव बेसिस पे जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो हार्ट के चैम्बर्स में हो रही है, दैट विल रेफर द cardiac cycle. And this cardiac cycle, this circulation process, this is the continuous and this is the constant throughout one's life. And जो contraction and the constant contraction and the circulation process ये the rhythmic unit में ये क्या rhythmic unit में takes place होता है, that we call the rhythmicity. That we also can say that it has ability to perform its work in a rhythmic unit. And after that, we see that there is one of the property of the cardiac muscle, that is the refractory period. Refractory period means during the contraction, during the systole, heart does not respond to any other stimulus. However, it may be strong. Heart only focus on its systole during the contraction. Hope it was all about the properties of the cardiac muscle. Hope आपको fully understand हो गया होगा ये lecture. Thank you. All the very best.